My name is Sonia. I'm a dance choreographer, fitness instructor, fashion model, and also an entrepreneur plus a healer. Anyone who would love to teach dancing or start dancing as a profession is to believe in yourself and to also remember that dance is a platform where you need to trust your movements rather than being cautious about what people say. Or so always remember to follow your heart. Well, just remember one thing: if you believe and if you strive through teaching dance and you trust the universe, trust me, everything is possible. Yes, my name is Sonia. I'm a dance choreographer, fitness instructor, fashion model, and also an entrepreneur plus a healer. I have come along this far through my life experiences, and I'm really humbled and grateful that to where I have reached today is all because of my mother. If it was not for her and her family, I wouldn't be here today. So I'm really grateful for their support. Dancing is very much close to my heart, and all I would tell anyone who would love to teach dancing or start dancing as a profession is to believe in yourself and to also remember that dance is a platform where you need to trust your movements rather than being cautious about what people say, or people will give you many negative comments about yourself, or they might even make you feel inferior about yourself. But it's the confidence that you actually built throughout your experience of life while teaching dance. So do not give up in yourself, and believe that dance is definitely a way to grow your career further. Dance has always been looked down upon because many people, they don't look it at a point of passion. They rather look it as a view on it's not making enough money for survival. But well, just remember one thing: if you believe and if you strive through teaching dance and you trust the universe, trust me, everything is possible. Even though how little money you earn, it is definitely worth it than working uh, towards other goals in life which is not connected to you. As in, like, probably for example, if your passion is dance and if you are going to do something else and that doesn't actually uh, pleases you or your heart, then I think you're going the wrong way. So always remember to follow your heart. And dance is a passion for me. The reason why I say it's a passion for me, because I treat it very, 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 very soulfully. Because when you're dancing from the soul. It's not something that you're dancing for um, money or your fame. It's something that you are actually connected to. So for me, dance is a very precious, very soulful, uh, something I connect to within my soul. Yes. Dance also balance the energies of our chakras. So a good way to balance your energies is through dancing, and it's also a good activity to keep fit and be more positive. And it's also a way of self-love. So I would always inspire everyone to take up dance as a passion rather than a money making profession. Try to learn different forms of dance that is connected to you, and as I said again, follow your heart.
And also, I would like to say, Dynamic Dreams is actually a passion group, and I've done many various performances with many beautiful people around Singapore, India. I conducted a lot of aerobics classes, Zumba, Bollywood, Bhangra. I've also hosted events like Baladi, and I also helped to organize fitness programs with other companies as well. But I think throughout my whole experience, dance has been very joyful and something that is very soulful. So if you want to know more about me and more about dance as an experience, please do look out my website, which is www.dynamicdreams1111.com, and you'll know more about me and my passion for dance. So thank you so much and have a nice day. दोस्तों, ये थी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी सोनिया खटवानी की कहानी, जो एक डांस आर्टिस्ट और डांस कोरियोग्राफर होने के साथ साथ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, फैशन मॉडल, हीलर और एंटरप्रेन्योर है। आज इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी मुकाम हासिल किया, इन सब का श्रेय इन्होंने अपनी माँ को दिया। डांस इनके दिल के बेहद करीब है और जो भी लोग डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले खुद पर विश्वास रखने का सुझाव उन्होंने दिया। ये मानती है कि ये एक ऐसा मंच है जहां आपको बजाय लोगों की परवाह करने के सिर्फ और सिर्फ अपने मूवमेंट्स पर भरोसा रखना होगा। लोगों के परसेप्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट्स के जरिए कई बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बुलंद रखना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त करना होगा। Do not give up on yourself, and you have to believe that dance is a way to proceed with your career further. People don't look at dance from the point of passion. जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग डांस को अपना पैशन नहीं मानते। People have always looked down on dance for their reasons. Some also think it could not help one to earn enough money for survivals. लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो गलत धारणाएं डांस के प्रति लोगों ने अपने मन में बनाई हैं, सबसे पहले जरूरत है इसे बदलने की, इसे चेंज करने की। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि डांस की बजाय दूसरे फील्ड में ज्यादा पैसा है, तो वो चाहकर भी वो नहीं करते जो उन्हें पसंद है, बल्कि वो करते हैं जिस और वो कभी जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। इफ योर पैशन इज डांस एंड यू गो ऑन टू डू समथिंग एल्स, that wouldn't actually please you and your heart. इसलिए दोस्तों, हमेशा वही करें जो आपको पसंद है। Always remember to follow your heart. आपका मन, आपका दिल कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुने। इन्होंने भी यही किया, हमेशा दिल की आवाज सुनी, और क्योंकि इन्हें डांस पसंद था, इसीलिए इसे ही इन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया। ये नहीं सोचा कि इसमें अर्निंग कम होगी या ज़्यादा, बस हमेशा इसे अपना जुनून बनाया। सिंगापुर और इंडिया में कई जगह परफॉर्म किया, एरोबिक, जुम्बा, बॉलीवुड और भांगड़ा जैसे कई सारे डांस फॉर्म्स लोगों को सिखाए, कक्षाएं संचालित की। शी इज ऑल्सो होस्टेड इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड फिटनेस प्रोग्राम्स विद अदर कंपनीज। तो इस तरह इन्होंने अपने डांस के पैशन को हमेशा जिंदा रखा। इसे आगे बढ़ाते हुए ये अपनी एक अलग पहचान कायम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी सोनिया खटवानी की कहानी। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और बन जाइए सभी के प्रेरणा स्रोत। फिलहाल वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।